Hello dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy today. Let's begin our class, that is Interaction 12, Unit 3, Level 3, page number 34. And the title of the activity is Ask another student about the weather forecast. फोकास्ट मीन मौसम की पेशन गोई. सो एक दूसरे तालिब इल्म से वेदर या मौसम की पेशन गोई के बारे में पूछ लो. एंड हियर इट से व्हाट्स द वेदर फोकास्ट फॉर टमारो. So the student B say, well, I just heard the forecast. It will be sunny tomorrow. It will be rainy tomorrow. So when we are talking about the forecast mean मौसम की पेशन गो. वन इज़ प्रिडिक्शन भी पेशन गोई क्यों कहते हैं, लेकिन फोरकास्ट ज़्यादातर मौसम की पेशन गोई के लिए इस्तेमाल होते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदर फोरकास्ट, सो वी यूज़ फोरकास्ट न कहो, फोरकास्ट, राइट. So when you are asking about the weather forecast, so what will student A ask? Good. What's the weather forecast for tomorrow? What's the weather forecast for tonight? किसी भी मुस्तकबिल का वक्त आप बताएंगे. What's the weather forecast for the day after tomorrow? What's the weather forecast for next week? What's the weather forecast for next month? Right? What's the weather forecast next Friday, next Sunday? When there is some program, some meeting, some marriage, etc. program, so usually the people ask the meteorologist that to know about the weather, that if it is the weather is bad, so we will change the program to another day. If it is rainy or if it is haily or snowy, so then they usually change the program to another day. So then they ask, and commonly also we ask nowadays. You see that the weather forecast for 1 month or for so many days also. So when a person asks what's the weather forecast for tomorrow, so the B can say that well, mean अच्छा, I just heard the forecast. मैंने सुना mean टेलीविज़न पर सुना, रेडियो पर सुना या मोबाइल पर सुना, लेकिन सुन लिया. या well, I just watched the forecast. Watched mean देखा, टीवी पे देखा और मोबाइल फ़ोन पे देखा या किसी और इलेक्ट्रॉनिक सोर्स पे देखा. और well, I just read the forecast. read past form read, we will pronounce it read. So अखबार में मैंने पढ़ा या मोबाइल फ़ोन में पढ़ा या किसी और ज़रिए में पढ़ा. So well, I just read the forecast. It will be sunny tomorrow. कल मौसम सूरज वाला होगा. It will be rainy tomorrow. बारिश वाला होगा. We have talked about the different condition of weather in the level first. You remember, for example, it will be cloudy tomorrow. Cloudy mean अबरलूद होगा, बादल होंगे. It will be rainy mean बारिश होगा. It will be pleasant next week. Pleasant होगा, खुशगवार होगा, fine होगा. It will be haily mean जलबारी होगी, गलाई जैसे हम कहते हैं. It will be dry, मौसम खुश्क होगा, राइट. It will be dusty, गर्द गुबार ज़्यादा होंगे. It will well की कंट्रैक्शन पाम एल हम प्रोनाउंस करेंगे. It will be showery, वक्फ़ों से बारिश होगा. It will be hot, गर्म होगा. Sunny, सूरज वाला होगा. It will be sweaty mean पसीने बहुत ज़्यादा होंगे, लोगों से बहुत ज़्यादा पसीने बह जाएंगे. It will be cold, मौसम ठंडा होगा, सर्द होगा. It will be cool mean नीम ठंडा होगा, ज़्यादा ठंडा नहीं. और जैसे warm नीम गर्म होगा. Cool और warm are such weather which the effect of which is good, जिसका असर अच्छा हो. We have discussed in detail these things. It will be muddy, कीचड़ वाला होगा, बारिश की वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा होंगे. It will be frosty, शबनम बहुत ज़्यादा होंगे, शबनमी होंगे. It will be foggy, धुंध बहुत ज़्यादा होगा, धुंध, राइट. It will be dewy भी शबनम को कहते हैं. और फ्रॉस्ट जैसे हम चनई कहते हैं या दैट्स dewy होंगे, जो कतरे पुलों वगैरह पर सुबह के वक्त होती है, पानी के कतरे. सो दैट इज़ कॉल्ड ड्यू से निकला है. इट विल बी क्लोज मीन हब्स होगा,
हब्स वही है कि बिल्कुल हवा नहीं हो और बंदे के दिल ज़रा डूब जा रहे हो, तो यही क्लोज होता है। इट विल बी क्लोज टमारो। इट विल बी ड्रेजलिंग, बूंदाबांदी होगा जिसमें बारिश भी हो और सूरज भी हो, ड्रेजलिंग, राइट। तो ड्रेजलिंग वाला मौसम होगा। इट विल बी पार्टली क्लाउडी, पार्टली मीन जुज़वी तौर पर, मुकम्मल नहीं, पार्टली सनी, जुज़वी सनी होगा और जुज़वी क्लाउडी होगा। इट विल बी स्नोई, बर्फबारी वाला मौसम होगा। सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशन ऑफ द वेदर, यू शुड आल्सो ट्राई टू लर्न देम. If I ask you, you will answer me. What's the weather forecast for the day after tomorrow? Well, I just heard the forecast. It tell me dusty the day after tomorrow. Now you ask me. What's the weather forecast for tomorrow? Next week. For next week आप कहे. So well, I just watched the forecast. It will be rainy the day after. It will be rainy next week. Now you should ask me about next Friday. What's the weather forecast for next Friday? Well, good. Well, I just read the forecast. It will be sunny next Friday. It will be sunny next Friday. So dear viewer, in this way, try to ask and answer question from each other again and again, in order to get full command upon that. And when you are talking about the weather forecast, you should use in this way. Try to watch the video in a proper sequence, level 1 2 3, and also watch the grammar, as well as if you are first year student, so we have started uploading the first year lectures as well. If you are not, and if there are some relatives of your, neighbors of your, friends of your are first year student, male or female, so inform them to watch the videos in order to get command upon the first year English. And you should also watch them. It will increase your vocabulary to a great extent, because that book is full of vocabulary, and for language vocabulary is must. Thank you so much. Khuda Hafiz.